Hello students. So today I am going to tell you some words, okay, that you can use in your IELTS writing in task 2. Okay, these are very important and that you can use in your task 2. First word is symbiotic relationship. The essays in which you have to talk about family relationships like the relationship between grandparents and children. You can say it's like a symbiotic relationship. Okay, this word you can use there. What is the meaning of symbiotic relationship? Means the bonding between parents and grandparents and children is win-win situation. What is the meaning of win-win situation? Means both grandparents and children दोनों को ही इसका फ़ायदा होता है. ओके, मीन्स के अगर चिल्ड्रन ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलेंगे तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका समय भी बीत जाएगा. दे विल ऑल्सो नॉट फील लोनली. ओके, एंड जो हमारे चिल्ड्रन हैं, ओके, दे विल ऑल्सो लाइक स्टे अवे फ्रॉम टीवी, मोबाइल फोन्स. ओके, सो दिस इज़ अ सिम्बोइटिक रिलेशनशिप. मीन्स के दोनों को ही फ़ायदा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी एंड चिल्ड्रन को भी. Second point that you can use in your task, that is reins of house nowadays is not only in the hands of men. What is the meaning of reins? Okay, what is the meaning of reins? reins ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ. ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਓਨਲੀ ਮੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਕਲੀਅਰ. ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਖਰਚਾ ਏ, ਕਲੀਅਰ, ਐਂਡ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਮੈਨ. ਓਕੇ, वोमेन आर ऑल्सो कमिंग अहेड. सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग जो आपको पंजाबी में मालूम है. ओके, एंड हम टास्क 2 में ऐसी ही चीज़ें राइट करें. स्टूडेंट्स, थर्ड वर्ड दैट वी हैव, वी आर हेडिंग टवर्ड इगैलिटेरियन सोसाइटी. इगैलिटेरियन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है यहाँ पर मैन एंड वोमेन उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ओके, ऑल आर इक्वल. देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देर इज़ नो जेंडर इनइक्वालिटी. Okay, so this is a very common word that you can use in your writing. Egalitarian society. Nowadays we are heading toward egalitarian society. The differences between men and women that are now negligible. Okay, they have equal rights nowadays. Okay, and the next word that we have, that is related to elder people. Okay, so you have to give examples also, like due to loneliness and full time elder people, they just they have a sitting schedule. Okay, full time they sit and they have nothing to work. They just eat and they just go for their sleep. They full time spend they just spend full time on the bed. So they have some kind of diseases. So these two diseases you can learn. Okay, arthritis and hypertension. Okay, next we have next word that is synonym. Okay, mitigate, to solve the problem. You can use mitigate word also, you can use ameliorate word also. Okay, to solve any problem you can say to mitigate the problem, to ameliorate this problem from the society. Okay, both these words you can use. Okay, on place of solve. Solve is a very common word, so you have to use some tricky words there. Okay, so that you can get high score. So you, both these words are very important. Mitigate and ameliorate. To ameliorate this problem from the society, people should do this thing. Okay, so these words are very important. You can note down one separate notebook, you should prepare for this thing. Okay, where you can write all the words, and daily you have to take reading of all the words so that you can use them in your essays. Okay, and one my suggestion is there that I am going to
give you at the end of this video. Okay, so just watch my video till end. Next word that we have, that is geriatric care. What is the meaning of geriatric care? It is a care that is related to elder people. Okay, this care is related to elder people, like government should focus on the geriatric care. ओके, कि एल्डर पीपल की नीड्स को देखते हुए गवर्नमेंट को कुछ न्यू सेंटर ओपन करने चाहिए, उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का कुछ मीन्स के सेंटर बनाने चाहिए. ओके, उनके चेकअप के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए. एंड जो हमारी एज है, ओके, वर्क के लिए एज भी बढ़ानी चाहिए. क्लियर? सो दिस वर्ड यू कैन यूज़ देयर. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इननेट एबिलिटीज़. इननेट एबिलिटीज़ होती हैं इनबॉर्न एबिलिटीज़. ओके, जो पर्सन के पहले ही अंदर होती हैं. ओके, जो उसने नेचर से नहीं ली होती. सो दिस इज़ इननेट एबिलिटीज़. So the tip that I am going to tell you here, in your IELTS writing and speaking, okay, everything just move and circle around the ideas. जितने आपके पास मैक्सिमम आइडियाज़ होंगे, क्लियर, जितने आपके पास आइडियाज़ होंगे उतना ही आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, तो आप उसको अच्छे से राइट कर सकते हो. एंड यू कैन give your 100% there. Okay, so just to get the ideas you have to increase your reading time.